Everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. Already we did two classes of the biology means health and diseases. We have completed part 1 and part 2 in our previous classes. If you haven't seen them, please do visit. You will get all the concept of health and diseases and which is really important for the defense examination. All right. So moving forward, in our earlier classes we did of the communicable disease, right, and the viral diseases too, dietary diseases and hereditary diseases. So now we will read about helminthic diseases. All right, before knowing what are the classification of helminthic diseases, we must know that what is helminthic diseases really is. Helminthic disease is also known as worm infestation. all right, जब इन्फेक्शन होता है, राइट, वायरस में क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं, राइट, जब वॉर्म का होता है उसे हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं, कॉमन वर्ड, okay, which is okay to know, right? So helminthic disease, also known as worm infection or infestation, is any macroparasite, okay, macroparasitic disease of human. It is the parasitic disease of humans and other animals in which a part of, see friend, it is important, in which a part of body is infected, all right, in which the part of body is infected with parasite worm, ऑल्सो नोन एज हेलमेंथिक, राइट. जो वॉर्म इन्फेक्शन होता है या इन्फेस्टेशन होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेलमेंथिक डिजीजेस बोलते हैं. ऑल राइट, सो यहाँ से हमारा हेलमेंथिक वर्ड ड्राइव्ड हुआ है, मीन्स राउंड वॉर्म से और वॉर्म से. ओके, सो देयर आर न्यूमरियस species of these parasite which are broadly classified into, अब इनको वॉर्म्स बोला गया है तो इनके जो क्लासिफिकेशन वो कैसा है, टैप वॉर्म्स, फ्लूक्स एंड राउंड वॉर्म. ऑल राइट, सो लेट्स सी Scaris, Teniasis and Filariasis. See friend, Filariasis is the most important question according to the competition point of view. All right, so let's see firstly Scaris. It is caused by Scaris lumbricoids. All right, this is the causative agent. Scaris lumbricoids spread through raw vegetable. How it spreads? It's spread through raw vegetable. All right, dirty hands and ingestion of the contaminated soil. All right, how it is spread? By the raw vegetable, dirty hands and the ingestion of the contaminated soil. All right, so what are the symptoms? How can we see that a person is having Scaris or roundworm diseases? Nausea, all right, cough, severe abdominal pain. See, it is the basic symptom of any of the parasitic infection or the roundworm infection. What? Abdominal pain. All right, because the food is the contaminated one. Okay, so sanitation and the use of anti-helminthic drug is important. All right, so next one is Teniasis. So Teniasis is caused by Taenia solium. All right, it is the causative agent. Now it is spread through improperly cooked food. Same. Okay, so abdominal pain would be there, and also through raw vegetable. All right, कच्चे सब्जियों से, which are not properly washed. all right, symptoms are chronic. अब जहाँ chronic word आता है ना, there are two word. Acute means for short time, chronic means for long period of time. all right, so symptoms chronic indigestion, anorexia, similar symptom of epilepsy. Epilepsy झटकी जैसे आना. all right, colloquial language में हम we can say. okay, so next one is filariasis. see friend, this is important one because इससे क्या होता है, एलिफेंथियासिस होता है, जिसे हम हाथी पाँव बोलते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय वुस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स, राइट. सो एलिफेंथियासिस किससे कॉज होता है, वुस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी. अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होगा देन वी विल गो फॉर फिलियारिसिस. ऑल राइट, सो ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक स्पीसीज ऑफ मस्कीटो. ओके, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट? इट इज़ द क्यूलिक स्पीसीज ऑफ द मस्कीटो. व्हाट आर द सिम्टम्स? फीवर, legs may become swollen if somebody some mosquito will bite, or okay, so there would be swelling in the leg. all right, and resembling with those of the elephant. so जैसे elephant के पाँव सूजे हुए होते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, पेशेंट का पाँव भी सेम हो जाता है. all right, so we can associate it, right. so destruction of mosquito and use of mosquito repellent creams and anti-helminthic drug are useful. okay, this is the remedy.
Next one is protozoan diseases. So protozoan diseases again classify into malaria, okay, and ambiasis, leishmanias, African sleeping sickness. So question मेनली आस्क फ्रॉम ऑल दिस, ओके. मलेरिया से तो पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन लेशमिनिया स्लीपिंग सिकनेस से भी पूछा जाता है. ऑल राइट. डिजेंट्री, इससे डिजेंट्री होती है. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोइन डिजीजेस. सो प्रोटोजोइन डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो मलेरिया है, इसके भी 4 स्पीसीज होते हैं. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकेंड है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, राइट. देन नेक्स्ट वन है प्लाज्मोडियम ओवेल, नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम मलेर. सी फ्रेंड, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्पीसीज होता है वो कॉमनली फाउंड कहाँ होता है? इंडिया में. ऑल राइट. सो इंडिया में कौन सा स्पीसीज है मलेरिया का? वो है मोस्टली फाउंड कौन सा होता है? वाइवेक्स होता है. ऑल राइट. सो फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम इससे क्या होता है? सेरेबल मलेरिया होता है. ऑल राइट. सेरेबल हेयर सिग्निफाइज ब्रेन पार्ट. सो नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम ओवेल. प्लाज्मोडियम ओवेल मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका. सो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्पीसीज है मलेरिया का जो इंडिया में मोस्टली पाया जाता है, ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी वाइवेक्स. Okay, so next one is Plasmodium malariae. So it is commonly in tropical Africa, Burma, Sri Lanka and part of India. All right, so पहले नंबर पे वाइविक्स हो गया, सेकंड नंबर में मलेरिया हो गया, राइट. सो मोस्ट इफेक्टिव अब दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर कोई भी मेडिसिन आता है मलेरिया की, सो उसका आंसर क्विनिन होता है. ऑल राइट. सो लेट्स नेक्स्ट वन इज लेशमिनिया. सी फ्रेंड, लेशमिनिया इज कॉमनली कॉल्ड काला अजर. Frequently asked question. See friend, I have collected all the information which is important for the examination. All right. So commonly called kala azar, caused by Leishmanias gambiense. All right. It is spread by sandfly, also known as phlebotomus. Okay. Just revise it once. Next one is African sleeping sickness. It is caused by trypanosomas. Okay, मैंने बताया था सोमियाज मतलब क्या होता है? Something related to sleeping. All right. It is the disease related to sleeping. Next one is parasite transmitted by CC fly. Okay, कौन से fly से होता है sleeping sickness? CC fly, also known as Glossina palpalis. Okay, Glossina palpalis. Next one is, now we have completed the protozoan diseases. All right. So next one is fungal diseases. Okay, so fungal diseases are also called mycosis. See friend, the study of fungal is known as myology. All right, so the disease are also called as mycosis. All right, mycosis are common in human as well as an animal. Simple one. Now the example of fungal infection or fungal disease is ringworm. It is caused by microsporium. All right, अब स्पोर बन जाता है इसमें, ठीक है. तो जहाँ भी फंगस आएगा तो उसमें क्या फॉर्म होता है? स्पोर फॉर्म होता है. इट इज स्प्रेड बाय अनबाथेड कैट्स, डॉग और इन्फेक्टेड पर्सन. These are the causative agent and by which the infection occur. In this disease, sores are formed. All right, I told you microspore, so we can relate sore. Here the sores are formed. All right, here the sores are formed, which become reddish and contain blister, which contain the blister. All right. It is treated by proper sanitation and hygiene. Simple one. Now there are some type of fungus. These are Aspergillus. See, Aspergillus fumigatus. Okay. Next one disease is meningitis, which is caused by fungus Cryptococcus neoformis, which is caused by Cryptococcus neoformis. Next one is dermatitis of breast and hair. So the causative agent is Trichophyton verrucovum, we can also say. Next one is athlete foot. It is the commonly asked question, Tinea pedis. Okay, you must know about it. Now next one is non-communicable disease. I told you because of the lifestyle pattern these happen. What? Non-communicable diseases. That's why I said you in my previous classes that a person should have a good lifestyle, that he could not get all this, the non-communicable diseases. All right, so these are diabetic, cancer, heart diseases, arthritis, osteoarthritis and gout. See friend, these are various kind of non-communicable disease, okay, which affect the health of human being. Okay, so next one is the non-communicable disease is diabetes. See, diabetes is a long-term condition which is caused by too much glucose in the blood. Simple one. What are the symptoms? Feeling very thirsty, urination frequently,
Okay, particularly at the night, feeling very tired, okay, weight loss and the loss of muscle bulk. This is important. These are the symptoms of the diabetes. Next one is arthritis. See friend, there are the three words: arthritis, osteoarthritis and gout. These all are related to musculoskeletal system. Okay, means muscles. See, it affect the musculoskeletal system, especially the joint. What? Arthritis. Next one is osteoarthritis, joint. अब जहाँ osteoarthritis आएगा वहाँ it is something related to inflammation of joint. All right, joint inflammation that result from cartilage degeneration. Although these are all related to these musculoskeletal system, but here it in the MCQ form it become little bit confusing. Okay, so we must know the difference between arthritis, osteoarthritis and gout. See friend, जहाँ भी ना इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड कुछ आएगा वो क्या होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑल राइट, देन गाउट, इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस. ओके, गाउट क्या है? काइंड है आर्थराइटिस का, विच अटैक्ड सडन बर्निंग. अब यहाँ क्या होता है? सडन बर्निंग और पेन होता है लेग्स में. ओके, एंड स्टिफनेस होती है बिकॉज दी इसमें क्या हो जाता है? कुछ सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, एंड स्टिफनेस एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट. ऑल राइट, सो हियर वी हैव completed our non-communicable diseases, and in our previous classes I completed the communicable diseases too. So here are some question, and in other classes too I'll bring some more question. Okay, so first question is, consider the following part. See friend, in serious examination the matching are the basic question they ask. Okay, so first question is, consider the following part. First one is Robert Koch, एडवर्ड जैनर, पास्चर, एमिल वॉन बेहरिंग. सी फ्रेंड, रॉबर्ट कॉच ने क्या डिस्कवरी करी थी? आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लासेस अबाउट इट. व्हाट डिड रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड? सी the option, pause the video for some time and solve this question. So we have to find the correct matched pattern. See, the last option will be correct because Robert Koch discovered anthrax bacterium. Okay, so anthrax bacterium discovered by the Robert Koch, and Edward Jenner discovered vaccine. सबसे पहले आई थी ना, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर ओनली. राइट, नेक्स्ट वन इज पास्चर डिस्कवर्ड द रैबिस. ओके, इट्स करेक्ट. नेक्स्ट वन इज एमिल वॉन बेहरिन डिस्कवर्ड द पैसिव इम्यूनिटी. ऑल राइट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्रिवलेंट इन इंडिया? सी फ्रेंड्स, hepatitis is prevalent in India, fluorosis is prevalent in India, meningitis is prevalent in India, so yellow fever is not prevalent in India. Next one is, match the following. Okay, so friend, these all are the type of the non-communicable diseases. Some angina pectoris, myocardial infarction. Okay, these are related to the heart diseases. Okay, and hypertension is related to blood pressure. And next one is atherosclerosis is also related to the blood vessels stiffening and the deposition of the fat. So I gave you the hint. So D का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, because atherosclerosis का क्या हो जाता है? फैट डिपोजिशन इन द ल्यूमेन. ऑल राइट, सो सी the answer, it is D का first. all right, so option D का first. We have two option. all right, so let's see. hypertension means क्या होता है? significant here myocardial infarction हो जाएगा हमारा, significant narrowing at the lumen of the coronary artery. all right, and angina pectoris क्या हो जाएगा? clot formation. and hypertension systolic and diastolic BP का हो जाएगा. so correct answer of 25th will be D. all right, next one is, which of the following are correctly matched? See friend, we have to find the correctly matched word. First one is, CC fly causes sleeping sickness. Yeah, it's correct. Female anopheles causes malaria mosquito, is caused by malaria mosquito. all right, it's correct. Next one, sandfly causes kala azar. all right, 26 के सारे options सही हैं, तो डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग. सो हियर वी हैव टू फाइंड द करेक्ट which are the matched correctly. so the answer of this question will be D. why? because syphilis किससे होता है? ट्रेपिनोमा पैलिडियम. ऑल राइट, एंड कॉलरा किससे होता है? कॉलरा, सी फ्रेंड, फाइंड दी कॉलरा किससे होता है? कॉलरा होगा आपका यूज़ ऑफ दी अगर कॉलरा किसी को हुआ है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. ऑल राइट, ORS.
देन डिप्थीरिया का क्या हो जाएगा, DPT वैक्सीन. ओके, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लासेस. सो बचा हमारा सिर्फ ए ही. सो वी कैन फाइंड आउट इन दिस मैनर. सो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज मैच द फॉलोइंग का ही है. सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इट. सो लेट्स सी व्हाट वुड बी इट. सो इसका क्या होगा, ए होगा. वाई? बिकॉज लेस्मीनिया डिनोविनी इज कॉज्ड बाय खालाजर. ऑल राइट. एंड ट्रैपिनसोमा जहाँ भी आएगा वहाँ वो उसका मीनिंग क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस. ये हेस्टोलाइट का क्या क्या करवाता है, सी फ्रेंड, क्या इसका क्या जाएगा, एम्बियासिस. सिंपल वन. वुशिया बेनक्रफ्टी इज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू. So it is filariasis. So we have completed this the lecture of the health and diseases. So here all the part have been completed. I have made 2 videos previous of the health and disease too. If you don't know, just visit there. Thank you. Keep learning. If you like the session, don't forget to like it, share it, and subscribe our channel. In case you don't know that we have live classes too of maths at 6 p.m. and of SSB at 8 p.m. Do visit there. Jai Hind.